Dear students, good morning. And in the last class we have discussed about the integration by method of parts. Continue with this particular topic. I am going to solve few questions in today's class. First question is today is integration log x. So here very interesting thing is that integration log x, there is a single function, but we do not know about the standard integral of log x, okay, but we know its derivative ddx of log x is equal to what? 1 by x. Clear? To use the method of parts, what we will do, we will take another function as 1, okay. One function is 1 and another function is what? Log x. So in this particular you will take, this is u, this is your first function and this is your second function. Because why we take log x and 1? Because I late in this rule what happened? Logarithm get first preference than algebraic, and you can write 1 as x to the power 0, and which you can be considered as what? That is algebraic function, okay. So we have, what we will do here, we are taking log x as what? First function. पहले हमने क्या लिया? log x को first function ले लिया. So our formula, I am remind the formula again, integration u into b dx equal to u into integration b dx minus ddx of u into integration b dx as a whole integration. Okay, this is our formula. Now here u is the first function I am consider and b is the second function. So likewise, if here u means what? Log x, and b means what? 1. So using the formula u into integration b dx, b means 1, okay, 1 dx means what? Dx hoga, minus ddx of log x, this one ddx of u into integration b dx. जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वहाँ में रिपीट होता है, जैसे इंटीग्रेशन b dx यहाँ में रिपीट हो रहा है. So integration dx, and after getting these results, give an integration with particular dx. Clear? Now integration dx means what? X. So x into log x, and ddx of log x means what? 1 by x. Integration dx means what? X. और उसके साथ तो dx मल्टीप्लाई है, x कैंसल, and finally this integral में क्या है? इंटीग्रेशन dx रहेगा. इंटीग्रेशन dx means what? X. So this is the final answer. So this is a very simple integral but useful one. So when log is there, you have to, whatever with the function with log, you have to choose what? You have to choose an log x as your first function. Log x as your first function. If you take log x as your first function, definitely your problem will be easily solved. Okay? So this is the first question. Now taking another questions of same type. The question is about x square plus 1 into log x dx. You are to solve this integral, okay? There are two functions. One function is what? X square plus 1. Other function is what? Log x. Okay? So यहाँ में two function है. It is algebraic and this is what? Logarithmic. So according to ILIT, L will get first preference. So we have to take log x as our first function. So using the formula integration u into b dx, this is your u, this is your b. U into integration b dx, b means what? X square plus 1 into dx minus ddx of u means log x, into integration b dx means what? X square plus 1 dx. उसको फिर इंटीग्रल करना है, again integration with dx. Okay. Now इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है? एक्स क्यूब बाई 3
एंड 1 dx, उसका इंटीग्रल क्या है x. ओके, सो डन. माइनस ये तो इंटीग्रेशन है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x, और उसका इंटीग्रल तो यही है. सो यू राइट x³/3 प्लस x इंटू डी एक्स. ठीक है. नाउ दिस फिगर you can write at x³/3 plus x into log x minus, now in this part you see x, if you make that particular, if you take x common here, वहाँ से x अगर common ले ले तो this x and that x will be cancel, and इधर क्या रहेगा, here will be what, x²/3 and here will be 1 only. ठीक है, अंडरस्टूड. एंड देन इट कैन बी x³/3 प्लस x इंटू लॉग x माइनस, नाउ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल x³ 1/3 बाहर आएगी. ठीक है, और x² का इंटीग्रल क्या हो रहा है x³/3. अंडरस्टूड, ब्रैकेट लगाओ बिकॉज दिस फॉर्म दिस माइनस, इसका इंटीग्रल क्या हो 1 इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रल क्या हो रहा है x हो रहा है. ठीक है, प्लस c. सो इफ़ यू डू कैलकुलेशन हियर 1/3 1/9 x³ होगा, बाकी तो ठीक ही है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व इफ यू नो द रूल, दैट इज हाउ टू यूज द मेथड ऑफ partial fraction. That's most important thing is that the rule isolate. If you understand isolate, then it will be very easy for you. रिमेनिंग ऑल द थिंग्स यू ऑलरेडी गॉट. वो करने के बाद, वो स्टेप के बाद बाकी सारे स्टेप ये आपको पता है. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या कोई भी रूल हो, सारी चीज़ आपको पता है. उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ठीक है. सो लेट अस मूविंग अहेड विद नेक्स्ट प्रॉब्लम. A very important question where I am going to discuss, and which is very important for examination point of view also. The question is sin inverse x whole square. This is the question. Okay, sin inverse x whole square. This is only one function. उसके साथ दूसरा फंक्शन क्या है 1 है. अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए जिसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, जैसे साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसके साथ 1 लगा के मेथड ऑफ पार्ट्स यूज़ कर सकते हो. कोई भी फंक्शन, जैसे सपोज आपको एग्जाम में आ गया x² माइनस a² dx, उसको इंटीग्रल करो तो कैसे करेंगे. अंडरस्टूड. यू डू नॉट नो अबाउट द इंटीग्रल ऑफ दिस, सो यू कैन टेक this is one function and with this another function is what 1, and use the method of parts. So I'll do this particular question also later on. Now sin inverse x whole square, this is your first function. As per our formula, you can write first function into integration of second function. Second function क्या है 1 into dx means what dx minus, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ क्या है फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो डी एक्स इधर है इधर भी लिखो, एज ए होल इंटीग्रेशन, एज ए होल इंटीग्रेशन. ओके, नाउ इंटीग्रेशन डी एक्स क्या है एक्स, सो यू कैन राइट एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अभी यहाँ हमें इसको डिराइवेटिव करना, देखो इसमें भी आपको वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट चाहिए. चेन रूल क्या है, फर्स्ट यू कंसीडर दिस इज योर x² टाइप. x² का डिराइवेटिव क्या होती है 2x होती है. 2 इंटू क्या होगा साइन इनवर्स x होगा कि नहीं, इंटू ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं, इंटू अगेन डिराइवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. व्हाट इज द डिराइवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x². And what is that integration dx? It is x into dx. This is your final integral. Now which equal to x sin inverse x whole square. Now this 2 is a constant, it will come out from the integral, and what will be the numerator? X into sin inverse x
divided by root over 1 minus x square dx. See, in a particular integral we have used chain rule, right? Also in this integral, you see here, going to solve this particular integral, what method we are going to apply? The method is there is substitution method. That is derivative of sin inverse x क्या है, 1 by root over 1 minus x square. मैंने आप लोगों को सब्सटीट्यूशन मेथड में बताया था, कोई भी फंक्शन हो वहाँ में कोई एक फंक्शन को आप चूज़ करो जिसका डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है. साइन इनवर्स एक्स इज ए सच ए फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो. तो यूज सब्सटीट्यूशन मेथड हियर. लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट, जेड. तो उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी जेड. ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है. और वहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल, अगर जेड हो तो एक्स क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन जेड हो जाएगी. तो यू कैन रिप्लेस एक्स बाई साइन जेड. तो इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये तो है आपके पास, साथ -2 इंटू दिस इंटीग्रल में आके देखो क्या हो रहा है. इन दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल यू सी एक्स कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट, साइन जेड, एंड साइन इनवर्स एक्स इज रिप्लेस बाय व्हाट, जेड. तो ये जेड हो रहा है, ये साइन जेड हो रहा है, तो यू राइट जेड इंटू साइन जेड. ठीक है, जेड इंटू साइन जेड. एंड डी एक्स बाई रूट ओवर 1, डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी जेड होगा. तो डेनोमिनेटर नहीं रहेगा इस प्रॉब्लम में. क्या होगा, देयर विल बी नो डेनोमिनेटर, बिकॉज डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इक्वल टू डी जेड. ओके, सो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल. अंडरस्टूड. इस स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करो. फ्रॉम हियर टू हियर हाउ इट्स कम, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन जेड, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जेड, डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर क्या हो रहा है, डी जेड हो रहा है. तो डेनोमिनेटर नहीं रह रहा है. ठीक है. नाउ दिस इंटीग्रल z is a variable, this z is a variable, so it is an algebraic function, it is a trigonometric function. Again by isolate what, this is trigonometry, this is isolate. Algebraic is before what, trigonometric. So from z and sin z, which one will be taken as first function? As per isolate rule, algebraic will taken as a first function. This is your u and this is your b. Okay, this is your b. Again use the integration by parts. X into sin inverse x whole square minus 2 into, third bracket दिया करो, and use this first function क्या है, z, integration of second function sin z. Don't write dx here, function is in terms of what, z, so dz लिखना. ठीक है, minus d dx मत लिखना, you write d dz of फर्स्ट फंक्शन क्या है, z, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन जेड डी जेड. इसके बाद ब्रैकेट लगाओ एंड यू विल गेट एज ए होल इंटीग्रेशन डी जेड. ओके, देन गिवन ए थर्ड ब्रैकेट. क्लियर. देन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर -2 इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन साइन जेड. We know that ddx of sin x is equal to what, cos x, but integration sin x is equal to what, minus cos x. So integration sin z what minus आएगा z sin z. Here also integration sin z minus, it will be cos z. Okay, here integration sin z becomes what, again what, minus cos z. This minus and that minus plus integration d dz of z is equal to what, 1 इंटू इधर माइनस कॉस, माइनस तो इधर आ गया, कॉस रह गया, तो 1 इंटू कॉस क्या होगा, कॉस जेड, उसके साथ डी जेड. ठीक है. सो नाउ योर इंटीग्रल बिकम्स सिंपलर. सो नेक्स्ट स्टेप, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर -2 माइनस से प्लस 2 कॉस जेड, 2 जेड कॉस जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉस जेड क्या है, इंटीग्रेशन कॉस जेड क्या है आप लोगों को पता है, इंटीग्रेशन कॉस जेड इज इक्वल टू व्हाट, साइन जेड. सो एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल. ओके, नाउ हियर यू सी दी 2 इज देयर, माइनस है प्लस है,
माइनस आएगा एंड 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 2 ऐड करो प्लस सी. नाउ our job will be replacing z by what? x. Replacing z by what? x. ठीक है. Now here you come, you see x equal to what? Sin z, means sin z equal to what? x. ठीक है. What will be cos z? Because you need cos z also. Cos z equal to what? Root over 1 minus sin square z, and which can be written as 1 minus x square. 1 minus what? X square. So cos z is equal to root over 1 minus x square, and sin z is equal to what? X. So replace all this value. Now 2 into what is that? Z is equal to what? Sin inverse x. And what is cos z? तो आप लिखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos z. इसके बाद z का वैल्यू लिखो sin इनवर्स x माइनस sin z इज इक्वल टू व्हाट? x and plus c. Okay, so this is the final answer. This is the what? Final answer. So these questions you need to practice 1 or 2 times, then you will make yourself expertise in this problem. Here in this problem I have used twice the integration by method of parts. So here substitution method also utilized, and also we have used the chain rule of differentiation. So all these things, small concept is required to solve a huge and big problem. So your basic are good, then there will be no doubt that you can easily solve the problem. I think no practice is also required. Once you've done it, you can solve any time, any moment. Just synchronize yourself to solve the problem. Okay, synchronization of the concept is very important. If you do it, then definitely there will be no issue. You can easily solve any equation. And the question I am going to solve today, integration sec cube x dx. Okay, so in such problem what happen, we will take the integral as I. Let I equal to what? Sec cube x. Sec cube x can be written as what? Sec square x into sec x. ठीक है. आप लोगों को दो चीज़ है, देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन? इक्वल टू व्हाट? 10x. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स? लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस 10x. अंडरस्टूड? ये है आपका फॉर्मूला. यू सी, इफ यू कंसीडर सेक एक्स एज फंक्शन बी, सेकेंड फंक्शन, तो आपको क्या होगा? इंटीग्रल में सेकेंड फंक्शन में इंटीग्रल आएगी बी डी एक्स, तो बी डी एक्स में आप लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस 10x आएगी. एंड व्हेन लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस 10x आएगी, देन वी आर मेकिंग द क्वेश्चंस मोर कॉम्प्लिकेटेड. एंड इफ आई टेक दिस इज बी, अगर इसको बी लिया जाए तो हमको सिंपल एक फंक्शन आएगी ओनली 10x. अंडरस्टूड? तो ये लॉग फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और लॉग अगर आ जाए तो प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. सो दोनों फंक्शन में, दोनों ही ट्रिगोनोमेट्री है, तो दोनों फंक्शन में किसको बी लिया जाए? सेकेंड फंक्शन लिया जाए. Among between these two function, if we take sec square x b as b, then we can easily solve the problem. So this is a special problem where both the function are trigonometric function, and it is up to you that how you take the which one will you are going to take as a second function. Okay, this is very important. Choice of the first or second function is very important. It will depend on your choice that how you are going to solve the problem, how you make the problem very more easier. Okay, so in this particular case हम लोग ने क्या करेंगे? sec square x को क्या लेंगे? सेकेंड फंक्शन लेंगे, और sec x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे. sec x को अगर सेकेंड फंक्शन लिया जाए तो more complicated result will become. Okay, that's why I am going to choose the second function as sec square x, first function as what? Sec x. So use the formula first function into integration of second function minus
ddx of first function into integration of second function into as a whole dx. ठीक है. Now what is the integration of sec square x? हम लोगों को पता है ddx of 10x equal to what sec square x, तो integration sec square x is equal to what 10x. And you also know ddx of sec x is equal to what sec x into 10x. And integration sec square x is equal to what 10x. Okay. Then you write sec x into 10x minus sec x into 10 square x. Okay. So here we will do some arrangement. What we will do? Sec x into 10x minus integration sec x, and this 10 square x can be written as what? Sec square x minus 1 dx. We know that sec square x minus 10 square x is equal to what? 1. तो 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. उस इक्वेशन से आएगी. ठीक है. Then you write sec x into 10x minus sec x into sec square x क्या है? This is your I, okay? Left hand side is I. Sec x into sec square x is what? Sec cube x minus sec x dx. Okay, and then you write sec x into 10x, and this one is what? Integration sec cube x dx minus minus a plus integration sec x dx. ठीक है. Now you see this integral is what? It is again repeat. So this is taken as your I. Consider it is at I. So I equal to sec x into 10x minus I plus integration sec x dx is equal to what? Log modulus sec x plus 10x plus c. Now this I, ये I को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो क्या होगा? ट्वाइस I इक्वल टू what? sec x into 10x plus log modulus sec x plus 10x plus ये तो C1 लिखो, this C1. ठीक है. Now our main job is to find what I. I means what? Integration sec cube x dx. So I equal to, dividing both side by 2, sec x into 10x divided by 2 plus half into log modulus sec x plus 10x. ये पे मॉडुलस होगा sec x plus 10x मॉडुलस, and this can be c1 by 2. ये क्या होगा? c1 by 2 होगा, and c1 by 2 is again a constant, and you can take as what? c, where c1 by 2 equal to what? c. ठीक है. So this is the final answer. So this is a very interesting questions, okay, super important, and in such type of problem there will be a 2 trigonometric functions, and which trigonometric function you are going to a first function and which one is the second function, that is very important for you to solve the particular problem. Choice of first function, understood, and choice of second function. Okay, so please do practice in such type of problem, then your idea will be developed. Okay, I am giving you one question to you, and please solve it, and also inform me that you have performed the questions, and in the comment box you please put your answer if possible. So question is what? Cosec cube x dx. This is the question I am putting you as an homework, and I believe that you can do it. Okay, I given hints. You have to write cosec square x into cosec x, and then start to which one will be your first function, which one will be your second function, and accordingly you solve this question. Okay.
Next question I am going to solve today. The question is integration x sin inverse x dx. This is very interesting question and very important for you. So here this is inverse and this is algebraic. So automatically inverse will get the first preference. It will be the first function. It is u and this is your b. So u into integration b dx minus d dx of u into integration b dx as a whole integration. Okay. Now this can be written as sin inverse x, and integration x dx is what? X square by 2 minus integration d dx of sin inverse x क्या है? 1 by root over 1 minus x square, and this is what? X square by 2 dx. इसमें हाफ है, हाफ तो क्या होगा? बाहर आ जाएगी. तो हम नेक्स्ट स्टेप में आप उसको क्या करो? हाफ बाहर ले आओ. ठीक है. नाउ here you see the numerator power of x is what? 2, and denominator power x is what? Also 2. Understood? So इसमें अगर x होता है, सपोज x होता तो आप क्या करते? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज यू हैव टेकन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वहाँ से x आ जाती तो आप सब्सटीट्यूशन मैथड यूज हो जाती. सो यू कैन यूज सब्सटीट्यूशन मैथड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. ओके, बट सिंस एक्स स्क्वायर इज प्रेजेंट, सो that's why this step is important. This step is what? Important. This step is what? Important. Remember this step. So वहाँ से आप next step में कैसे जाएंगे? How to moving forward to the next step? That's important. One thing you know, you got an expression like that a square minus x square. इस टाइप की एक्सप्रेशन में what is the trigonometric substitution? Your trigonometric substitution is equal to what? ax equal to a sin theta. Okay. So here you see, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम में आपका आइडिया नहीं हो रहा है, तो आपका इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन मिले तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दें. तो हेयर x इज इक्वल, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, a equal to 1, then it becomes 1 minus root over 1 minus x square, and your substitution becomes what? Your substitution become what? X equal to what? Sin theta. So in this particular to solve this particular integral, what is our procedure? Our procedure is to use the trigonometric substitution. x is equal to what? Sin theta. ठीक है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, इसमें लिखो x equal to what? Sin theta, and dx equal to what? Cos theta d theta. ठीक है. x equal to sin theta means theta equal to what? Theta क्या होगा? Theta equal to what? Sin inverse x. So you can write x square by 2 into sin inverse x. इसमें लिखने का कोई जरूरत, इट इज़ ऑलरेडी परफॉर्म इंटीग्रल, ये हो गया है, उसको साथ लिख के जाओ. हाफ तो बाहर आएगी, एंड एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा. एंड इसमें क्या होगी? इफ़ यू पुट एक्स इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा. रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा. सो यू कैन राइट दिस इज कॉस थीटा. ओके. एंड dx क्या है? हमारा dx क्या होगा? dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा. तो दिस वन एंड दैट वन विल कैंसल. ठीक है. देन व्हाट हैपन? इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस हाफ. इसमें वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विच माइनस हाफ इंटू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा. You know that there will be no standard integral for sin square theta. Okay, square of any trigonometric function, square of, cube of, all to the power 4, there will be no such type of what? That is standard integral available. But sin square theta, we know that's 2 sin square theta equal to what? 1 minus cos 2 theta. Or sin square theta equal to what? हाफ इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा. उसमें कन्वर्ट करके इंटीग्रल कर सकते हो. तो उसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हाफ इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख दूँ तो हाफ बाहर आएगी. इट बिकम्स व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स. हाफ इंटू हाफ मीन्स 1/4, and it becomes 1 minus cos 2 theta d theta. Okay.
Now perform this particular integral. So it can be written as x square by 2 into sin inverse x minus 1 by 4. इसको इंटीग्रल करे क्या हो, इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा, and integration cos 2 theta d theta. We know that integration cos mx dx is equal to what, sin mx divided by what, m. डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये m मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में ये कोएफिशिएंट क्या होगा, डिवाइड होगा. तो cos 2 थीटा d थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 प्लस c. ओके, नाउ which equal to x square by 2 into sin inverse x minus this can be written as 1 by 4 theta sin 2 theta equal to what, 2 sin theta cos theta, and 2 to cancel, it becomes what, sin theta cos theta only. Now comes to our particular result. What is sin theta? Sin theta equal to what, x. What will be cos theta? Cos theta will be what? Cos theta will be root over 1 minus sin square theta equal to 1 minus x square. ठीक है, cos theta will be what, root over 1 minus x square. And what is theta? Theta equal to what, sin inverse x. So put all this result, x square by 2 into sin inverse x minus 1 by 4. What is theta? Theta equal to what, sin inverse x. What is sin theta? Sin theta is what, x. Cos theta equal to root over 1 minus x square plus finally add the constant c. So this is the way you have to solve this particular questions. Most important, this I have given a remark on important step. आप प्रॉब्लम में क्या है, उस स्टेप में जाके फंस जाओगी कि उसमें क्या करना है. तो पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेप को याद रखें, वहाँ में क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ले लीजिए, और देन यू प्रोसीड द प्रॉब्लम, कैन इजीली सॉल्व ऑल द स्टेप्स. सो इन दिस प्रॉब्लम देर आर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इज ऑल्सो यूज्ड, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया है. इसके बाद साइन 2 थीटा यूज़ किया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट, स्मॉल that is formula is required to complete the particular questions. So I hope you understand, and this few problems I have solved in this particular class, and I believe that there will be no doubt for you, and I have given a one homework to you, and I will be very happy that if you solve this the questions, and also give send me the information in my comment box. Okay, and if you have a doubt, then definitely you address this. In the next class I will just give a hint to the particular problem. Okay, so this problem is very important. And another one is I have solved sin inverse x whole square dx. ये भी बहुत important है. दोनों प्रॉब्लम्स को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. अगर प्रैक्टिस करेंगे ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगी. ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है, एंड यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग. इन इंटीग्रल कैलकुलस मोस्ट सबसे बड़ा हथियार है, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. एंड अनदर इज यू नो टाइप ऑफ द इंटीग्रल, एंड यू नो दैट इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल. ये 3-4 चीज़ को आप अगर माहिर हो जाओ आप, देन नोबडी विल स्टॉप यू in any type of integral. Okay, so thank you very much.